Today, in this class, we are going to start functions of management. Okay, this is probably the most important thing that you need to understand while you're studying principles of management, because this function of management has to be taken as a foundation in every other subject that you study. चाहे आपकी स्पेशलाइजेशन एचआर हो, चाहे आपकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस हो, or your specialization is marketing. Whatever your specialization be, this five function of management is something that you need to understand as the very foundation of your course. Understood? So I have explained this to him and one more boy who was there in the first class, and I think you all were not present then. So I'll repeat that example and I'll take feedback from you in this class to explain you the functions of management in a better way. Okay? First you write down functions of management, जिसको हम elements of management भी कहते हैं. There are five functions of management. The first one is, tell me, yes, learning. I'll just get the marker. What are the five functions of management? Planning, organizing, staffing, directing, Controlling. So these five functions of management, the terminologies you know, but but do you understand what it is all about? Little bit? Okay. See, you have to deal with all these functions in detail. Okay, बहुत detail में ये पांचों को आपको principles of management में पढ़ना है. So don't worry too much if you do not understand in one go. Okay, you will be understanding in the subsequent classes. This is just the foundation class for principles of management. Understood? Let him get the marker. Right up. The first is planning. The second is organizing. Third is staffing. Fourth is, and the fifth one is control. Right up. आपने जब PGDM कोर्स लिया है, मैनेजमेंट का कोर्स लिया है, then you please get into a habit of linking what you study in one subject with another subject. Okay? Management का कोई discrete चीजें नहीं होती है. Understood? Like when you are studying functions of management, you should understand कि अगर आप functions of management यानी अभी nature of जो मैनेजमेंट क्लास में आपको पढ़ाया, उस नेचर ऑफ मैनेजमेंट में you understood that management is management has universal applicability. What does that mean? Tell me. जरूरत होती है, यही था. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मीन्स that whether you take example of a school, whether you take example of a college, a government hospital, a university, an office, whatever the place be, management has universal application, which means कि manage करना चीजों को ये हर जगह ये five function से ही होता है. ठीक है? आप कहीं पे भी manage करेंगे, you will need this step planning, you will need this step organizing, staffing, directing and controlling. Understood? We'll deal with them one by one. Let's start with planning. What is planning?
Do not tell me what is planning. Just tell me example of planning. That is the better thing you can do. Planning what plans what you do in the future. Okay, we plan for future. This is what comes out from this statement that we plan for future. हम भविष्य के लिए plan करते हैं. आपको कल जाना है यहाँ से लखनऊ, तो आप कल के लिए plan करेंगे. कैसे घर से निकलेंगे, क्या टिकट है आपका, क्या टाइम है, right? So apart from that, मैम जैसे कि एक इस कॉलेज का न्यू बिल्डिंग बन रहा है, तो उसका सर हम लोग को इंडक्शन क्लास में डेमो दिखाया था, तो एक तरह का डेमो, एक तरह का प्लानिंग था. तो उस तरह से अब वो प्लान जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो पहले प्लान बना कैसे है, मनी कहाँ से आएगा, लैंड कहाँ से दिया जाएगा, एंड वर्कर किसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, एंड दिस दैट. तो वो इस तरह से Very. कोई भी कार्य करने की प्लानिंग किया था. हाँ. जिसको this is called planning. So this much at least you all understand what is planning. Planning is any future course of action, right? Planning is a future course of action. What you are doing, what you are going to do in future, you will plan today. And management is so much about planning. एक अच्छा मैनेजमेंट में प्लानिंग की बहुत अहमियत होती है. It is said in management that a manager who fails to plan plans to fail. मतलब समझ में आया? हाँ, अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप फ्यूचर में कैसे फेल होने वाले. यही प्लानिंग होती है उनकी, यानी यही कॉन्सिक्वेंस होता है उनका जो प्लानिंग तरीके से नहीं कर पाते हैं. So this is a very strong statement about planning, that a manager who fails to plan plans to fail. So planning is something which is based on future course, which is for future course of action. Future course of action means you're planning for something, some step that has to be taken in future. But how is planning done? Means कि ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्डिंग चल रही है, VGDM का कोर्स चल रहा है, बट वो प्लानिंग का हो सकता है कि कोई कैटलिस्ट योर पास्ट एक्सपीरियंस, कुछ आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है. नहीं समझ रहे? जैसे आपने डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर रोड, संडे के दिन आपने ये सोचा कि नहीं, मंडे के दिन आप जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बनारस जा रहे हैं आप, और आपने एक पर्टिकुलर रोड चूज की जाने के लिए, बाय रोड. यू प्लान टू गो फ्रॉम अ पर्टिकुलर रोड, पर्टिकुलर वे. बट लास्ट टाइम जब आप गए थे तो आपको ये पता चला कि मंडे को उस रोड में आने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, एंड मंडे इज एन ऑफिस डे. ओके, सो द ट्रैफिक, so if you take 5 hours to reach Banaras from Patna, it took you 9 hours to reach. So next time when you will plan a trip to Banaras through road, will you not consider the day? You will consider the day. If it is a Sunday, it is okay. If it is not, you will think कि ये रोड लेना सही नहीं है, लास्ट टाइम बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया था और हम जिस काम को करने गए थे वो दिन ही बर्बाद हो गया. This is called past experience. अब समझ में आया सबको कि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लानिंग हमेशा किसी नए चीज के लिए किया जाए. हो सकता है कि प्लानिंग किसी और चीज का करेक्शन भी हो रही हो, right? For example, something is being done in this organization, in this institution, but what happened कि उसका result अच्छा नहीं आ रहा है. So maybe when we plan it for another time, okay, when we plan it for the next time, we will not do what we have been doing. We will change the plan. Why? Because that was not giving us the required results, or that the result was very costly. Result costly सिर्फ पैसे की वजह से नहीं. The result was costly in terms of time. The result was costly in terms of cost. The result was costly in terms of efforts. बिजनेस में इन चीजों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है. टाइम इज मनी. ओके, understood? Like you're a student right now, okay, you will utilize most of your time. This you should
utilize most of your time now in your study to build up a life which is full of, you know, everything. You're settled. एक अच्छी नौकरी के लिए आपको बहुत मेहनत अभी करनी चाहिए. Because when you grow more elderly in life, you'll have lots of responsibilities. You'll have more responsibilities. So planning is very important. So what I was telling, that planning is future course of action, but it could be based on, this planning could be based on past experience or your present circumstance. Present circumstance or your future or fresh plans. अब इसका क्या मतलब हुआ? प्लानिंग का मतलब आपने बोला कि दिस इज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हमें क्या करना है भविष्य में, दैट वी आर मेकिंग इन प्लान्स. ओके फाइन, बट दिस नीड नॉट बी इम्पोर्टेंट दैट यू आर ओनली प्लानिंग अ फ्रेश थिंग. Maybe your planning is based on some past experience, just as I gave you the example of this Banaras thing. Okay. Second thing is your present circumstances. For example, ITC, you know, Indian Tobacco Company. ITC was a company, initially it was just involved in tobacco. Cigarettes, tobacco, cigarette का काम करती थी ITC. But the way it started finding that government was putting curbs on tobacco use, cigarette बहुत जगह ban है, fine हो रहा है states में, चोरी छुपे हो रहा है is another thing, but openly the government has curbed it. तो क्या होगा, उसका business down हो जाएगा, बिकेगा कम, उस states में तो नहीं बिकेगा. For example, Bihar and Gujarat are dry state, so alcohol is banned here, legally, officially at least it is banned here. The same thing is in Gujarat. Okay, so this present circumstance means that there is something going on in present and because of which you're planning for future. For example, if my company sees that the government, if I'm from ITC and if I'm seeing that government's day to day, government is making the rules and regulations regarding tobacco, cigarette more and more stringent in different states. And it is very difficult to survive only if you are in cigarette business. So we need to diversify. हमें किसी और फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करना होगा, वरना हम पीछे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे. बंद हो जाएगा ना, अगर उसका सब डिमांड सप्लाई पे ही बिजनेस चलता है, अगर उसका सप्लाई बंद हो जाएगा तो फिर डिमांड खत्म हो जाएगी. अंडरस्टूड? So it planned its business. अभी आप इस एक मार्ट चले जाइए कहीं भी, कोई भी छोटा सा बड़ा सा मार्ट, वहां आप जित प्रोडक्ट्स उठा लीजिए, 10 में से 7 प्रोडक्ट तो जरूर ITC का हो. ITC has, you know, diversified in every possible thing. Sunfeast and all these are from ITC. Marketing में भी है वो बहुत ज्यादा, right? So it was only after it realized that इस business में उसकी चीजें बंद हो जाएंगी that it started planning for future. This is known as your present scenario. कुछ present में ऐसा हुआ है जो आपको future में अलग plan करने के लिए force कर रहा है. Next is future plans. Once the company is established, or if the company wants to venture out in new things. For example, Reliance was already in communications. Reliance was already in petroleum. Reliance then diversified. Diversify मतलब अलग चीजों को try करना. Reliance then diversified in Reliance Trend, jewelers, footwear, Reliance Fresh, yes, groceries. It diversified. So that is about your future plan. Or future plans, I told you it could be based on any of these things. But future plans जैसे ये diversify वगैरह करना होता है,
So this is more suitable for an organization which is rich, which is mature organization, which has sufficient capital, sufficient technology. कि अगर फेल भी हुए तो ओवरऑल बिजनेस पे ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट पड़ेगा और वो डूब जाएंगे, राइट? Reliance was initially in which was not a ready-made thing, okay, not ready-made clothes, but वो बहुत ज़्यादा चला नहीं. Then it diversified into Reliance Trend, and women apparel is doing really good in Reliance Trend. Okay, gradually they diversified into men apparel also. So मोटा मोटी समझ में आया कि प्लानिंग क्या होती है? Understood? When we define it more, or I'll make you write more about planning. Don't worry, I'll make you write. अभी तक जो पढ़ाए हैं आप लेक्चर सुनिए और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा. You understood what is planning? Yes, ma'am. Next we move on to organizing. What is organizing? Akriti, any idea what is organizing? Yes, ma'am. Ma'am, organizing means it deals with the human resources, human efforts, and also arranges the resources in the organization. Organizing is not just about human resources. Can you be a little more specific? Organizing means they arrange the resources which are needed to fulfill the goals. This is still a general vague answer. Anyone else? Organize करना किसको कहते हैं तुम बताओ? मैम प्लानिंग के बाद जब उस काम को अंजाम देना होता है तो उस काम की तैयारी के लिए जो करते हैं, जैसे मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो हमें चाहिए कि अब ये सामान है हमारे पास लिस्ट है, ये से हमको करना होगा. Putting plan into action. Right? मैम पहले तो अगर एक स्मॉल लेवल पे देखा जाए तो मुझे प्लान करना है कि मैं ये डिश बनाने जा रहा हूँ. मैंने पहले प्लान किया मैं ये डिश बनाऊंगा. ऑर्गेनाइज करना मतलब उसका जो रॉ इंग्रेडिएंट है वो हम बाजार से खरीद के लाएंगे. तो दैट्स ऑर्गेनाइजिंग. ये ठीक है. Putting plan into action is called organizing. In just one word, if you one liner definition of organizing could be that putting plans into action. Organizing का मतलब बहुत wide होता है. ठीक है? This is a very wide topic. I have decided. See, you gave the example of that building. Okay, the classes will be operated as soon as that building is fully furnished. But that is a plan. That is still in the planning phase. But even for organizing, you need to plan. So after that step, when you decide to organize it, put the plans into actions now. So organizing में क्या होगा? When you talk about, चलो take example of this institution, आपको समझ में आएगा. I already told you there is a faculty room, there is a canteen from where tea and coffee is made. There is a non-admin room. There is a chamber for center head. There is a chamber for dean. There is an account section. There is library, and these are the classes. Okay. क्या होगा अगर सारे लोग एक ही साथ बैठे रहे? ये कैबिन ना हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, ये पार्टीशन ना हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन ना हो, काम सही तरीके से पता नहीं चलेगा कि कौन सा काम पता नहीं चलेगा, हाफिजार्ड हो जाएगा, आवाज एक दूसरे को सुनाई देगी, काम करने में दिक्कत होगी, स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा कि टीचर्स कौन है, नॉन एडमिन स्टाफ कौन है, कौन उनको किन से एडमिशन के बारे में पूछना है, किन से डिसिप्लिनरी एक्शन डील करना है, कौन फैकल्टी है उनके, कहाँ उनको ब्लेजर लेना है, कहाँ लाइब्रेरी है, यही होगा ना. एंड दिस यू आर थिंकिंग एट सच अ स्मॉल स्केल, जहाँ आप 1 मिनट में ये पूरा बिल्डिंग घूम जाएगा. स्मॉल बिल्डिंग. What about a 3-floor office? Imagine about a 3-floor office. Imagine an organization like, imagine about Indian Army. Such huge organized body. Imagine about university. अब समझ में आया? आप किसी यूनिवर्सिटी में PhD करने गए हैं and you would know nothing. That will be a total chaos. So organizing basically deals with
Identifying the activities, you identify the activities कि आपके organization में क्या क्या हो रहा है, and then you segregate those activities. Understood? You have organized the activities and then you put those activities at one place. How would that help you? And how would that help in management? आपने segregate किया तो वो activities एक जगह पे हो रही है. Understood? Faculties are sitting in one room. You know, everybody knows that if you want to reach out to faculty, you have to go to that room. Is it not a psychological comfort when you're sitting here? I know that these are PGDM students. I have my class from 2 to 3 in PGDM. I'll straight away come to this room. Imagine every day I need to find PGDM students to teach. Tension होगा, chaos होगा, time बर्बाद होगा, और extra effort लगेगा. And please do not neglect the human element in this. अगर आपको रोज रोज किसी काम करने में दिक्कत होती है तो आपका उस काम से मन उचट जाएगा. Irritation होगा. This irritation will cause non-attachment with your work, right? I told you this example. Imagine every day I need to find out PGDM students. Where are you sitting? Where are you sitting? 2 to 3. I need to find out classes. So this is the reason why organizing is very, very important. You identify the activities and then you segregate it together. This is how departments are segregated in organization. Means accounts related work here, put them in finance department. These people are to be hired for finance department. Understood? These are HR people. These people are required for recruitment. These people are required for selection. These people will do the activities related to performance appraisal. These people will do the activities related to training and development. And all the HR activities will be segregated to one department, which will be known as Human Resource Department, HR department. Then there will be a separate department called Marketing Department. और आप जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में का नाम लें, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि पीपल आर डूइंग मल्टीटास्किंग बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ कैपिटल कि आप अलग अलग बंदे हायर करें अलग अलग चीजों के. आपने देखा है कि बहुत इनिशियली कोई कंपनी जब स्टार्ट होती है तो यू नो इवन द हेड ऑफ द कंपनी इज आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू कट कॉस्ट ऑन मनी. कट द कॉस्ट ऑन the expenses they would be required to pay others. Understood? A lot of businesses that operate today on online, like women's kurti, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आज बहुत हिट हो गई, जिनका बिजनेस एक्सपैंड हो गया. They started in a 2-room flat where the owner was bringing the product, where the owner was responsible for sticking the sticker, and she was responsible for packaging the product and then disposing of, and simultaneously she was taking care of the family, her child and everything, multitasking. Gradually when the business expands and when you have money, what do? You start organizing it better. You hire people, you put them to work. Understood? Organization का एक structure होता है हमेशा. अभी आप आगे पढ़ेंगे उसमें फ्लैट स्ट्रक्चर या टॉल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के हिसाब से कम्युनिकेशन फ्लो करती है. फॉर एग्जांपल, जनरली द कम्युनिकेशन विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस. ऊपर से नीचे, ऊपर वाले अथॉरिटी देते हैं. And the communication flows from bottom to top in the form of, नीचे वाले ऊपर से क्या बात करेंगे, क्या करना है? Queries. Apart from queries, any suggestion, any advice, new ideas? Understood? So that is all that you will learn in organization structure. So organizing में, if you consider organization structure as human skeleton, okay, we have head, we have arms, we have bones.
If you consider, so that together makes the body, right? All of them segregated together makes the body. But that is very important to understand that each body organ has its own functions. Similarly, organizing and departmentalizing has its own function, has its own importance. Organizing will help you manage more and behave in an orderly manner. Understood? And I told you departmentalization is done like this only. You segregate the activities. First you identify the activities and then you segregate it. Okay? And then departments are built like this. Okay? Next is staffing. Staffing का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया उसमें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी. If you want to run any organization, taking a push, for doing the work. Okay, anything more? Akriti, tell me. It's the process of selection of employees, and it involves directing promotion and compensation and motivation. Okay, very good. Do you have BBA as your background? Yes, ma'am. Okay, BBA. Yes, Yes, she's right. स्टाफिंग को अगर आप जनरल टर्म में बात करें या rather it is very specific. When you talk about staffing, what is staffing? Staffing is human resource. Talking about human resource. Okay. The other day I wanted to make it very easy for you to understand at initial level and then get into the technicalities of it. So I explained it to him saying कि अगर आप सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो या तो आपने किया होगा या करते हुए देखा होगा अभी तक स्कूल कॉलेज कहीं पे भी, तो वहां जब काम अलॉट होता है एक बंदा तो नहीं कर सकता है पूरा सरस्वती पूजा मैनेज. लोग बांटते हैं, हम लोग चंदा किसको इकट्ठा करना है, मूर्ति किसको लानी है, प्रसाद का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है. एंड देन देयर वुड बी पीपल हु वुड गो फॉर कलेक्शन ऑफ चंदा. वो एक सेपरेट ग्रुप होगा. अब आपके ग्रुप में कुछ उदंड लोग भी हो सकते हैं, you know, who are not soft spoken, who are not very nice to behave kind of thing, who are short tempered, है ना. तो आप प्रेफर करेंगे क्या उनको कि अब वो जाएं चंदा लेने के लिए? करेंगे? वैसे तो कोई क्यों नहीं करेंगे? Why? बिल्कुल. या फिर काम बिगाड़ देगा, तुम्हारा पर्पस सर्व नहीं करेगा. अगर वो लड़ाई ना भी करे, कर तो लेगा ही, लेकिन अगर वो ना भी करे तो ही नॉट सर्व द पर्पस. बिकॉज चंदा लेने में यू हैव टू शो सम स्किल्स, लाइक यू नीड टू परस्यूएड पीपल. आपके देखा ना, घर पे चंदा लेने आते हैं तो वो लेके ही जाते हैं. फिर अंकल जी आपकी कॉलोनी में हो रहा है, आपकी कॉलोनी में हो रहा है, सरस्वती माता के हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग ये हैं वो है. अंडरस्टूड? हम लोग प्रसाद घर पे पहुंचा देंगे, आप भी आइए, बच्चों को लेके आइए. राइट? यू नीड टू काइंड ऑफ बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम, यू नो, टेम्पररी दो. हाँ, अब वैसे में आपने किसी ऐसे लड़के को भेज दिया, चंदा नहीं देंगे, ऐसे कैसे नहीं देंगे? चंदा दीजिए, ऐसे कैसे नहीं देंगे? कॉलोनी का हो रहा है, सर गजब बात कर रहे हैं आप. ठीक है, हम लोग ऐसे वैसे नहीं है, स्टूडेंट हैं पटना कॉलेज के. अंडरस्टूड? You getting my point? This is where staffing comes into being. Putting the right people at right work. Human resource. Human resource, that is people. That is people. Same thing. So, If any produced by human, it is not human resource. human resource is different. You're not getting it. Human resource मतलब ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स होते हैं. आप जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, आप थे क्लास में? नहीं थे. देखिए, इसीलिए क्लास एक दूसरे से लिंक्ड होता है. ठीक है, इसको बता देते हैं, थोड़ा इनिशियल है, बेस ही खराब हो जाएगा. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है द इनपुट दैट यू पुट इनटू अ बिजनेस और समथिंग टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. यानी इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या दे रही है आपको? सर्विसेज. टीचिंग इज सर्विस, इंश्योरेंस इज सर्विस, बैंकिंग इज सर्विस.
You go to SBI, they'll treat you differently. You go to ICICI, they'll treat you differently. You understand that? They are providing service and you will be a customer to them depending upon the kind of service that they render and if you like it or not. यही होता है. तो या तो ऑर्गेनाइजेशन गुड्स देती है या तो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज देती है. यही होता है. What are the 4 factors or the inputs that you put in to produce goods and services? Land, ठीक है, लिख लो तुम. लिखे ना ये ठीक है. Land, labor, capital and entrepreneurship. लिख लियो तो ठीक है. हाँ, इसमें से एक ये जो लेबर है इसको हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे अब मैनेजमेंट में. लेबर का मतलब वो सिर्फ ईटा कैरी करने वाला नहीं, ठीक है. लेबर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स. अंडरस्टूड? लाइक आई एम अ लेबर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. I am one source of input to this organization, which is labor. Labor, employee, workers, human resource, ये सब अब आप एक ही मतलब समझेंगे. Factors of production समझेंगे. Understood? So human जो resource बनाते हैं वो नहीं. Human सारे resource बनाते हैं. लेकिन human खुद resource होते हैं. This is known as human resource. Understood? कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी, मान लीजिए 2 कॉलेज में एमबीए चल रहा है, एमबीए का कोर्स कराया जाता है. कोई ऑर्गेनाइजेशन आई आपको प्लेसमेंट के लिए एंड देन दे सेड दैट यू पीपल आर बेटर देन अदर्स. आपके 2 साल की ग्रूमिंग के बाद इफ यू कम आउट टू बी अ better learned person, better management student than other colleges, they would say you are better human resource to them than them. समझ में आई बात? तो वो क्यों होगा? आपकी वजह से होगा. तो आप एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. Okay. So where were we? We were dealing with staffing. Staffing means choosing the right person for the right job. This is very, very important. Very, very important. No matter how good a plan you made, no matter how much capital you have, no matter how well organized your organization is, how good the organization's structure is, it will not be successful or the entire structure is going to collapse if you do not have people supporting it. Understood? इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना अच्छा प्लान किया, कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्केलेटन है आपका. That plan will eventually collapse अगर आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स या मैन पावर नहीं है उसको सपोर्ट करने के. You know, the management philosophy is so much about the top management philosophy, which is communicated deep down. For example, see, human resource का management is very, very important part about an organization. Okay, so in staffing, the more learned your staff is, the more experienced your staff is, the more trained your staff is, the more motivated your staff is, the more benefited, the more happy, the more willing to serve your staff is, that will eventually reap you results which is unmatched. Okay? Human resource के बारे में जो staffing की हम बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा elaborate करते हैं. It is said that if there are 2 companies, A and B, and you have 4 factors of production with equal capacity. समझ में आया? जैसे 100 करोड़ इसके पास है तो 100 करोड़ उसके पास भी है. Same technology इसके पास है तो same technology उसके पास भी है. And other factors. The same amount of land is present with A and same is with B. Land, labor, capital, entrepreneurship. यहाँ पे भी same है. Land, labor, capital, entrepreneurship. Why I've written 1 and 2 is an organization can copy the entire system from another organization, but not labor. ठीक है?
लेबर को कॉपी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता है बताइए? Because every person अपने- is अपने skills different, होते हैं। every mind works different. Yes, same answer. And any different answer? काम करने की क्षमता भी अलग होती है. Labor is known as the intellectual capital of any organization. Understood? Labor is known as intellectual capital of any organization. And this is something you cannot copy. एक बैच में 50 लोगों को ट्रेनिंग मिलती है. ट्रेनिंग की बात छोड़ो, तुम लोग अपना ही एग्जाम्पल लो. There are 20 people sitting in one class. I come here and I'll teach you, and I'm teaching you principles of management. I'm imparting the same lecture to all of you. Okay, same lecture. I'm not making any difference in imparting my lecture. But maybe somebody will gain it better. Right? Somebody will gain it better. Why? Because it's your own personal differences. It's your personal difference that makes human different from other. Right? Your own personal capacity. इसी subject में principles of management में when you proceed further, there is OB attached to this subject. Yes, organizational behavior इसी subject के साथ है. OB में I've not seen your syllabus, but there must be individual behavior and group behavior. तो जब हम group behavior पढ़ाएंगे, individual behavior पढ़ाएंगे, तो हम उसमें बताएंगे कि individual behavior में पढ़ाया जाता है motivation, attitude, personality, learning, and all of these things. Why? Because I give you, आपको same motivation lecture का हम link भेज देते हैं. अगले दिन कोई आएगा और बोलेगा ये सब तो चलता रहता है. ठीक है? Some people, some of you would be like, this was a really nice lecture. I learned a lot from it, and I'll try to implement it in my own life. So motivation lecture is also something that works on you only when you allow it to. Right? वरना materials की तो कोई कमी कहीं है नहीं अभी के time पे. This is the individual difference in you that makes one human different from another. And perception. Perception is also one important thing. Staffing की बात कर रहे हैं हम लोग. कि staffing में क्या different होता है? क्यों staffing इतना important है? Perception. For example, I am teaching in this class. अगर कोई अगला आदमी आके आपसे feedback ले, शिल्पा मैम कैसा पढ़ाती हैं? Maybe some of you will say she's a good teacher. Maybe some of you will say that she's not a good teacher. I can't understand what she says. And some of you will say I'm not interested in her class. ये आपका perception है. आपका अपना perception हो सकता है. Sorry? This is true. You can have your own perception about the same thing. And that is why human beings are very important. Organization में कुछ हुआ, उसका reaction हर इंसान का अलग अलग हो सकता है. Right? Right. जैसे for example, जब कंप्यूटर आया था बैंक्स में, पहले जब काम मैनुअली हो रहा था, बाद में जब कंप्यूटर बहुत ज्यादा आने लगा बैंक में, तो people revolted against it. उनको लगा कि हमारी नौकरी चली जाएगी कंप्यूटर आने से. So this is the kind of resistance from time and on organization witnesses. Okay. See, basically staffing में कुछ चीजें हैं जो आती हैं. First is, you can write down recruitment and selection. Staffing में आता है. Good staffing में इन चीजों का ख्याल रखा जाता है. Second is training and development. Third is performance appraisal. Fourth is compensation management.
and there are many more. These are the 4 most important, so you can write it down. We'll discuss all of these in detail when we study staffing in details, okay? What? Appraisal. Performance appraisal means आपने ये सुना होगा कि लोगों ने काम किया 1 साल के बाद उनका पैसा बढ़ा, ये सुना है? इंक्रीमेंट, ठीक है, वो सारा वर्ड्स अलग अलग है, जितना जो तुमने जो साथ में मिला दिया सारे वर्ड्स अलग अलग है, इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, एवरीथिंग. बट हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, मनी अप्रेजल हुआ और सैलरी बढ़ी, ये सुना है? ये सुना है कि निकाल दिया इसको? ये सुना है कि ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया इसको, जॉब से निकाल दिया, ये सुना है? नहीं सुना है? सुना है ना? This is called appraisal. Systematic evaluation of your performance. How you have performed in the organization is known as performance appraisal. अब ये appraisal time to time होता है, organization और department के हिसाब से different होता है. For example, marketing people, क्योंकि इनका target based job होता है, कहीं आपको 3 महीने में ही अपना sales target दिखाना होता है. Have you ever gone to this Aditya Vision? Ever? Look at how they are into selling. Why? क्योंकि उनका appraisal होता है वैसे. The number of units sold. Understood? Have you seen these Zomato people? These Zomato delivery boy, when they come, they'll insist on rating them. Please rating कर दीजिए. They get 10 rupee extra on one rating that you give them. Understood? If you rate them, they'll get 10 rupee extra from the organization. That is why they are so pro into it. Please rate us. These Ola people, if you take an Ola, they'll insist on rating them. Please rating दे दीजिएगा. So these are incentive based jobs, and this is something where performance appraisal depends. Performance appraisal अभी समझ में आ गया, अभी तक समझ लो, ये बहुत ये इसको पढ़ा मतलब पूरा explain करने के लिए 3 क्लास लगेगा. Performance appraisal, okay? There are methods and reasons. So each of them would require 2-3 classes. These steps. So I already told you, do not panic. We are just in the initial stage. We'll get into it gradually. So let it sink in. Let the subject sink into you gradually. So फिर interest भी बना रहेगा subject में. Recruitment and selection. So these 4 things you have written that we need to take care of in staffing. So as of now, for now, you just understand that human resource is very, very important for any organization. Say for example, I have studied biology and I come here to teach management. क्या ये अच्छी HR staffing हुई? नहीं, उससे क्या होगा? Quality down हो जाएगी. The required result नहीं मिलेगा. Management के student को पढ़ाना है, then I should have a background of management to make you understand what is management. Understood? So that is how staffing is done. Understood? So keep the class till here. In the next class, we'll deal with the rest too. Fine? Direct and indirect payments which are made to you. Services, you render service to the organization. आप organization में काम करते हैं, तो वहाँ कुछ direct payment होता है, कुछ indirect payment होता है. Direct payment माने salary, your wage, your incentive, everything. Indirect payment means no, bonus is always monetary. Indirect payment, जैसे conveyance, okay, traveling expense, not traveling expense. Then you talk indirect payments जैसे facilities, जिसका कि आप monetary value निकाल सकते हैं. Yes, all of those things. Indirectly they are compensating you as in बोनस भी तुम जो बोले हो वो कहीं कहीं स्पेसिफाई करना होगा कि क्या. Not like दिवाली बोनस और this is not indirect. जैसे कि आपको कन्वेंस दिया जाता है, ठीक है, और कुछ फैसिलिटीज दी जाती है. अलाउंस जितने भी होते हैं जैसे डीएनएस अलाउंस, they are direct benefits, they are not indirect. Just yes. एचआरए, that is direct benefit. एक compensation देखो पूछ के तो बता देते हैं. पीएफ
PF is direct, PF is statutory, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो काटना ही है काटना आपको. कॉम्पेंसेशन में 4 पार्ट आता है. One is your salary, one is your basic pay, second one is your allowance, third one is your benefits and incentives. Benefits like entertainment or Yes, a lot of it. And the fourth one is rewards and recognition. Okay, so indirect payment भी होता है इसमें, जैसे कि जैसे तुमको जो जितना examples बताए हम, plus there are other things like you have performed really well and you are holding a substantial position in the organization. The organization sent you for a family trip at their expense. They sponsored the trip. Gifts, recognition, all these. Understood? Well, incentives के ऊपर क्या Benefits.